welcome all of you, and our facilitator, Ms. Sunita Kedia too, is all set to begin with this wonderful session. So I now hand over the reins to Ms. Sunita to carry on with this wonderful session. Thanks a lot. So, I hope all you are enjoying your lockdown period. आप सब अपना lockdown period enjoy कर रहे हैं? Yes, yes. Yes. Okay. So I will mute all of you now. Okay. वो If खुद ही mute कर anything दे। have any question, can write in the chat. Can write in the chat. And if you want to say something, raise your hand. I will unmute that person. Is it fine? हाँ, सबको सही है ये? हम सबको म्यूट कर रहे हैं अभी. किसी को कुछ पूछना हो तो अपना क्वेश्चन चैट में लिख दीजिएगा. कुछ और बात करनी हो तो you raise your hand. I will unmute you. I think it's clear to everyone. Sure. Thank you. Okay. So I'm sharing this screen. स्क्रीन नहीं दिख रही ना? हाँ कर रहे हैं. एक सेकेंड. नहीं, वो नहीं है. ये में है. अब दिखेगी. अरे यार, क्या मालूम था हमें. ये ट्रेनर है. Sunita, I guess you'll have to press share screen first, and then after that open. Yeah, it's screen is shared now. Everyone can Yes. see the screen. Yes. Yeah. So today we all are just in search of the happiness. So can anyone say what's the happiness? Happiness क्या है आपके लिए? I haven't mute anyone of you. Can you share? Anything that we enjoy. बोल सकते happiness क्या है? To? Anything that we Sorry? enjoy. Enjoy. Okay. What to enjoy? If you can clarify further. अगर आप और आगे further clarify कर सके. Someone else? Happiness is What is self-loving for me. For you? Hello. Self-loving for you. Wow, very good. And I like more participation. Hello. Hello. पकड़ना तो बता देना. Yeah, happiness Happiness क्या है? is the state of mind. Okay, where we can Yeah. feel good of ourselves as well as the community surrounding to us. Wow, great. Let me ask you something. Are you ready for a question? Okay. So, what you do when you are hungry? Eat. आपको जब भूख लगती है तो क्या करते हैं? You can Eat. write in chat box also if you want. Eat. Very good. अगर tired हो तो क्या करते हैं? Relax. Sleep. Relax. Wow. Dirty हो तो Clean. clean. Wash. Wash. Wow. Okay. और bored हो गए हो तो if you are bored, Entertainment. Find out some fun. Yeah. find out some fun. और दुखी हो तो कुछ काम कर रहे हो, वर्क Concentrate. अब क्या करते हैं? Concentrate. Concentrate. Very good. Very good. But when you are happy, then what you do? Enjoy. Enjoy. So we are happier already enjoying. Yes. What else you do? So when we are happy, actually happy is the moment when we don't do anything, we don't want to do anything. It's an independent moment that moment we don't want anything else rather than that happiness. Happiness एक ऐसा moment है जहाँ हमें और कोई pleasure की जरूरत नहीं रहती है. वही moment हमारे लिए सबसे best, सबसे बेहतर होता है.
That is the happiness. Right. So it's a Installment momentary তিনি ম্যাচ experience. পয়েন্ট ছাড়ি দিয়েছেন It's a momentary experience. It's not the continuing ନେଟ୍ ରେ like ପାଠ that. ପଢା It's ହଉଛି one moment we are happy, in ସମସ୍ତଙ୍କର the very next ମୁଁ ତ moment ପାଠ we are ପଢା not ହଉଛି happy. Once I would request all to kindly mute their mics. So that is what the happiness is for us. Like it's a bitmap, we make in digital world bitmap image. Bit by bit we make the image. The happiness is also like that. एक एक point wise, एक एक moment हम लोग happy होते जाते हैं. So we be happy more and more happy, happier by day, by moment by moment. So there was you can say it's a scenario is there, a father and two daughters. A person had two daughters and he loves both of them. Elder one is married to a farmer and younger one to a potter. Both of them called him and asked him to pray for them. Elder one asked for rain, whereas younger one are requested to pray for sunny day. What he should do to be happy? Can you write your answer in chat box? Out of these 4 options, pray for rain, pray for no rain, nothing or something else. What he should do to be happy? Can you answer or should I unmute you? ହଉ ଠିକ ଅଛି ନହେଲେ ଭୋରୁ ଯାଇକି ଧର ନେଇ ଆସିବ ଏଟିଏମ୍ ରୁ ହବନି Like to Unmute everyone, madam. order yeah, pray for rain. Pray for daughter's happiness. Which daughter? He have the 2 daughters. One is for pray for rain. If he pray for rain, other daughter will be unhappy. Nothing. बिना कुछ किए वो कैसे खुश होगा? Okay. I got a lot of answers. Someone is saying pray for rain. Someone is saying to do nothing. But how can you be happy without doing anything? Can you be? Happiness is action, to take action. We have to take the action to be happy. Without taking any action, we can't be happy. We can't feel fulfilled. Do you agree? If you agree, please type yes in chat box. If you agree, please type yes in chat box. Okay. So what do you do? So what is that? Happiness is very personal. For one daughter, rain is a happiness. For other daughter, sunny day is a happiness. Happiness बहुत personal है. आज हम सबको पैसे चाहिए, लेकिन कितने पैसे चाहिए? किसी को हो सकता 5 करोड़ चाहिए, किसी को हो सकता 50 करोड़ चाहिए. It's very personal. We need to decide what is happiness for us. सबके लिए अलग-अलग पैरामीटर हो सकते हैं. It's very situational also. हर एक सिचुएशन पे हमारी हैप्पीनेस चेंज हो सकती है, हो सकती नहीं होती है. जब हम बच्चे थे तो हमारे लिए एक गेम खेलना हैप्पीनेस था. एक कैडबरी हमें मिल जाती किसी से तो हम खुश हो जाते थे. जब हम थोड़े बड़े हुए, स्कूल जाने लगे तो हमने अपने पैरामीटर्स, अपने टारगेट सेट किए कि हमें मार्क्स चाहिए. कितने मार्क्स चाहिए? किसी को 90%, किसी को जस्ट पास हो जाए तो वो हैप्पी है. तो हमारे ये सिचुएशन के बेसिस पे हमारी हैप्पीनेस की डेफिनेशन भी चेंज होती जाती है कि क्या चीज हमें खुश करेगी, हमारे लिए क्या हैप्पीनेस, क्या मैटर करता है. वो हर वक्त लाइफ के साथ आगे जैसे हमारी जिंदगी बढ़ती है वो चेंज होती रहती है. तो वी नीड टू नो व्हाट इज हैप्पीनेस फॉर मी. हमारे लिए क्या खुशी माने रखती है वो हमें जानना बहुत जरूरी है. यहाँ इस किसान ने, दिस पर्सन ने न, जब वो अपनी बेटी से बात कर रहा है, व्हाट इज हैप्पीनेस फॉर हिम. उसकी बेटे की खुशी में उसकी खुशी है, लेकिन फॉर हिम उसकी पर्सनल हैप्पीनेस किसमें? ही नीड टू नो दैट.
and he need to act accordingly. उसी के हिसाब से उसे काम करना होगा. अगर वो अपनी एक बेटी को खुश करेगा तो भी वो दुखी रहेगा कि दूसरी बेटी के लिए वो दुखी रहेगा. दूसरी के लिए वो खुश के लिए प्रे करेगा तो पहली के लिए दुखी रहेगा. तो he have to find out उसकी खुशी किसमें है. जब वो उनसे बात कर रहा है, जब वो अपनी एक बेटी से बात कर रहा है, तब वो उसमें उसी के साथ बात करे, 100% अपना देके उसके साथ बात करे. तो उस मोमेंट में जब वो अपनी बेटी से बात कर रहा है, वो खुश है. तब उस फोन पे उसके साथ बात कर रहा तो उसके साथ वो मिलकर उसके लिए प्रे कर रहा, तो उस मोमेंट में वो खुश है. जब सेकंड मोमेंट में अपनी बेटी से बात कर रहा है, तो सेकंड बेटी से जब बात कर रहा है तो उसके लिए वो प्रे कर रहा है, तो उस मोमेंट में वो खुश है. तो he have to be 100% in that moment to enjoy that moment and to be feel happy in that moment. जब वो उन दोनों से बात करके निकल जा रहा है, फिर भी अगर वो उन दोनों की बातें अपने दिमाग में रखेगा कि मैं किसके लिए प्रे करूं, एक को धूप चाहिए, एक को पानी चाहिए, क्या करूं नहीं करूं, तो वो कभी खुश नहीं हो पाएगा. वो हमेशा कंफ्यूजन की स्टेट में रहेगा, वो डिसीजन ले नहीं पाएगा. तो he have to come out of that moment. If next moment वो जो भी काम कर रहा है, जो भी कर रहा है, he have to focus on that. अपना 100% मोमेंट में देना होगा. He should be पूरा अटेंटिव रहना होगा उस मोमेंट में. Then he will feel the happy. आज के दिन क्या होता है, मोस्ट ऑफ द लोग खाना खाते समय या तो बुक पढ़ रहे होते, न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते या टीवी देख रहे होते. तो क्या वो खाना एंजॉय कर सकते हैं? क्या आप बता सकते हैं 2 दिन पहले आपने क्या खाना खाया था? प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स अगर किसी को याद है तो. 2 दिन पहले क्या खाना खाया था? प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स. किसी को भी याद हो. राइस, आप नॉर्मल डेली राइस खाते होंगे, स्पेशल कुछ खाया हो तो? नो. यस, डेली राइस खाते होंगे. तो मोस्ट ऑफ द लोगों को हम लोग को याद नहीं रहता वो खाना हमने खाया था तो उसका टेस्ट कैसा था. बता सकते? राइस याद है, उस दिन खाने में टेस्ट कैसा था? जो सब्जी थी वो मीठी थी, खट्टी थी, नमक ज्यादा था या कम था, वो हम नहीं बता सकते क्यों हमारा ध्यान उसमें टीवी में रहता है, उस खाने में नहीं रहता. हम उस खाने को जो हमारी बॉडी को एनर्जी देता है, उस खाने को हम यूज नहीं करते, उस खाने को हम इंजॉय नहीं करते. खाते समय भी हमारा ध्यान कहीं और रहता है. Sure. When we eat, our focus is on TV or either on books or either on newspaper or magazine. So we are not able to enjoy our food. We are not able to enjoy the moment we are taking the food. We are eating the food. We are not able to taste the food. We are not able to understand. We are not able to identify the different taste. मेरे husband है, वो जब खाना खाते हैं आइदर उनके पास सामने टीवी रहता है या न्यूज़पेपर रहता है. हमने अधिकांश समय देखा है वो जब आधा खाना खा चुके हैं होते हैं उसके बाद कहते हैं, आफ्टर दैट वो कहते हैं कि खाने में नमक कम है, इस सब्जी में नमक कम है, थोड़ा नमक दे दो, जबकि वो अपना आधा खाना खा चुके होते हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है. क्योंकि व्हाई दिस हैपन? बिकॉज हिज फोकस इज मोर ऑन टीवी, नॉट ऑन द टेस्ट ऑफ द फूड. फूड बट हैबिट की तरह खाए जा रहे हैं. तो वी नीड टू फोकस, वी नीड टू इन्वॉल्व इन द एक्टिविटी व्हाट वी आर डूइंग 100%. देन वी एबल टू एंजॉय ईच एंड एवरी मोमेंट. That's what we do. To live each and every moment of the life happily, 2 things we need to do. We need to involve 100% in that particular moment. We should not carry a legacy of the past, or we should not be worried about the future of the next moment. Then we will able to enjoy that moment completely. Destination is a journey. Sorry. Happiness is a journey, not destination. We all have the same destination. Start point and end point is same for each one of us. Starting point is birth and the end point is death. But that journey, that makes us the happy. I am a chartered accountant. हमने बहुत मेहनत की and I got that qualification. अगर जब हम I qualified, that moment, still I cherish that moment that I am a chartered accountant. लेकिन क्या हमने बिना मेहनत किए वो डिग्री पा ली होती, without doing the hard work, क्या हम बहुत खुश होते?
क्या हमें वो खुशी मिलती जो आज भी हम उस मोमेंट को याद करके खुश होते? क्या हम खुश हो पाते? आई कुड नॉट बी, बिकॉज वो जो एक्सपीरियंस था मेहनत करके उस सीए की डिग्री को पाने का, क्वालिफाई करने का, दैट हार्ड वर्क, द लेबर आई हैव डन, the learning and learning. I've done science. After that, I've done the CA. So all that process that made me feel proud. And today I am feeling very happy whenever I say anyone that I'm a chartered accountant. I feel proud on, and not that proud. It's the happiest moment of my life. I should say that. So it's a journey. We need to enjoy the journey, not the destination. What we do, ki hame we want to achieve our business target is of the 100 crore I want to want the 50 crore, 10 crores. What's happened when we make the destination as our happiest link with our happy? What happened? As soon as I receive that moment, I start thinking of the next target. We forget to enjoy that moment of achievement because we are focusing on the destination, not on the journey. So we need to shift our focus from destination to journey. Destination is there to motivate us, but our happiness lying in the journey, not in the destination. So that shift we need to do. Happiness, आजकल it's an instant noodle का जमाना है. Everything we want instant. So instantly we want कि आज हम खुश भी instantly हो जाए. So do anyone can share me, can write in a chat box what can make you happy instantly? If you want yourself to make happy instantly, how can you? आज अगर आप अपने आप को तुरंत खुश करना चाह रहे हैं, इंस्टेंटली आप अपने आप को खुश कर सके ऐसे चुटकी बजाते हुए, तो कैसे कर सकते हैं? एनी आइडिया, एनीथिंग कैन यू शेयर विद मी? राइट इन चैट बॉक्स. लिसन म्यूजिक, वाओ, वेरी गुड. टॉकिंग टू डियर वन, वाओ, लवली. प्ले विथ माय किड्स, राइट, good, all music, very good. Eating dessert, wow, lovely. Wow, lovely. Similarly, if you instantly you want to make happy somebody else, what will you do? Eating puchka. Oh, same here. If you want to make happy someone else instantly, what can we do? Cook their favorite meal, very good. But if not instantly, sir, when you're cooking the food, it takes some time. Instantly, like this, you want to make someone happy. Charity, okay, charity is a good thing. Make them smile. What you do to make them smile, that's the objective. Praise the person, very right. We need to appreciate that person. If we appreciate that person, we can easily make the person happy. Appreciation is the best way to make somebody else happy. What else we can do other than happiness? Just smile. Smile is enough. Wow, great. Now if you want to do some activity, you can do tinkle. आप गुदगुदी भी कर सकते हो उस इंसान को हंसाने के लिए, खुश करने के लिए. That is also one way. Now if you want some action, instantly you want to do that make both of you happy. उसमें क्या कर सकते हैं? Instantly we can make happy both of us. अपने आप को भी, दूसरे को भी. तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? What can we do? I smiled as total stranger, got back the most radiant smile. Wow, lovely. Smiling. Joke. Wow, great. Chai. But joke से वो नहीं भी खुश हो सकता, because वो बहुत दुखी है. तब क्या करेंगे? Share each other happiness. Lovely. So we need to remembering a happy moment, share with that person. Wow, great. Some stranger है, then smile will work. One more thing we can do, we can hug that person. Once we hug somebody, it not only make us happy, वो हमें खाली खुश नहीं करता, एक बहुत सुकून भी दे के जाता है. जो सुकून हमें मिलता है वो किसी और चीज से नहीं है. You can hug the person also. So that can also, compliment is there, appreciation someone said, that's great. We can do that. But what we can do for this? क्या करना चाहिए हमें? So we can say that life happiness is equivalent to experience. हमारे एक्सपीरियंस हमें हैप्पी बनाते हैं, हमारे एक्सपीरियंस हमें दुखी बनाते हैं, हमारे एक्सपीरियंस हमें जो भी इमोशन फीलिंग है जो हमें देते हैं. तो एक्सपीरियंस इज द इम्पोर्टेंट थिंग. सो वी नीड टू मेक अपने एक्सपीरियंस को हमें इस तरह से बनाना है, उस तरह से अपने एक्सपीरियंस को लेना कि वो हमें खुशी दे, हमें हैप्पी करे, हमें दुखी ना करे.
So for that, I just like to show you something. अभी क्या कर लाइट साइड बंद थी दिख रहा है वीडियो में उनका दिख रही है नहीं तुम लोग देख रहे तुम लोग को दिख रहे वो देख पा रही है क्या Can you say कि किस तरफ घूम रही है, किस डायरेक्शन में घूम रही है ये? Can you, everyone can see this video? Please say yes or no through chat box. Yes, you can see the video. Can you see? Yes, we can Yeah, see. right. So can you tell me in which direction it's moving, clockwise or anti-clockwise, right or तुम रोज अपना करते रहते हो ना Clockwise. clockwise clockwise? Everyone agree? Clockwise or anti-clockwise? Anti-clockwise. Someone is saying clockwise. Baki log clockwise or anti-clockwise? Most of the people are saying clockwise. Clockwise. But I like to say, agar aap, if you look at this picture, right to the middle one, you will see the लड़की घूम रही है इस तरह क्लॉकवाइज. अगर आप लेफ्ट में देखेंगे फिर सेंटर में देखेंगे तो वो घूम रही है एंटी क्लॉकवाइज. डू यू एग्री? प्लीज राइट इन चैट बॉक्स इफ यू एग्री. Write in chat box if you agree. So we need to change we just need to shift our focus. हमें राइट से देखना है या लेफ्ट से देखना, पूरा सिनेरियो चेंज हो जा रहा है. It's reverse. If once we shift our perspective, we can see the situation in a different way, or we can experience happiness each and every moment by shifting our focus. So how many of you can think is possible to shift our focus? Yes or no? Please write in chat box. Anyone think it's difficult to do? No, everyone, it's right. At time audio Can we please switch off our video cameras because the cameras are taking a little too much of bandwidth. If we can switch, that would be nice. Let only Sunita keep her video on. Okay. Yeah. Thank you. I'm sharing again the screen. One second. One second, it's got stuck, I think. Stop sharing. So any question anyone have? You can write in chat box if you have any questions. So we need to, खाली एक बार नहीं, हमें बार बार अपने शिफ्ट को चेंज करके अपनी लाइफ को री इंटर करना होगा. अगर कोई ऐसी घटना हमारे दिमाग में बैठी है जो हमें बॉदर कर रही है, that disturbing us a lot, that making us uncomfortable each and every time, what we need to do? We need to shift our focus and re-enter the as and when, until unless we can feel happiness about that also, or at least not happiness, we can be neutral about that कि वो हमें affect नहीं कर रही, वो हमें negative vibes नहीं दे रही है. We need to do that. So let's do one exercise. Everyone can do this. Why this is it?
Everyone, this is the this number is 508. आप अपने पास लिख सकते हैं, आप बता सकते हैं. You have to make a bigger number by shifting a stick. बिगर नंबर बनाना है, एक स्टिक को शिफ्ट करके 508 से बड़ा होना चाहिए वो नंबर. Can anyone suggest me and write in chat box, or should I unmute? Let me unmute. One 908. unmuted all of you. 908. Raise the hand. The person will raise the hand. I will unmute that person also. जो भी जवाब देना चाह रहा है वो अपना हाथ ऊंचा करे, रेज हैंड रेज करे. I will ask that person. Yeah, I unmuted. 986. Yeah, sorry. 986. Can you repeat? Yeah, 986. Now कैसे करोगे? That How it will be? It can be 600. No, one stick from 8 can be removed and put it near 5, so that would be 9. And another from 8 will be in between, that's 0, so that will be 986. Okay, Two now sticks next from 8 has to be removed. Two sticks from 8 has to be removed. One can be put on 5, so it would be 9. And another can be put in between the 0, so that would be 8. Okay. So 8. Okay. So that would So be how can you make a bigger number by shifting 2 sticks? Earlier was 1 stick, now it's a 2 stick. 51181. So how can 5118? 51181. 51181. Wow, very good. Biggest number by shifting a 2 stick. Biggest number. Biggest number क्या होगा? 51181. इससे बड़ा हो सकता है. Bigger than that. Bigger than anyone? 8118. 909. 8118. I will show you the answer. It can be 8118. Yeah. If you have to shift one stick only, 909. This is the one answer. 51181, ma'am. 51181, right? Some people have said this one. कुछ ने ये नंबर बताया है और है उसके बाद बड़ा है. अगर हम इसको रिवर्स कर देते हैं तो क्या हो जाता है? 81151. इससे बड़ा ये है और इससे भी बड़ा. अगर 5 के ऊपर टू द पावर हम कर देते 118 तो बिगेस्ट नंबर ये हो जाता है. डू यू ऑल एग्री? प्लीज राइट इन चैट बॉक्स. If any confusion, please write in chat box. Correct. So now, like, I want to hear. आपसे जानना चाह रहे हैं. Now this is in lockdown period. ये कभी किसी ने सोचा नहीं था. हम लोगों ने से किसी ने भी नहीं देखा ना कभी कल्पना की थी कि ऐसा भी कभी हो सकता है कि हम अपने घर में ही बंद हो जाएंगे. So I like to know from all of you. I'm sharing all. I'm not doing sharing. I want to see your faces now. कि जब ये लॉकडाउन की न्यूज आपने सुनी थी कि ऐसा दुनिया में हो रहा है तब उसमें पहली बार आपके मन में क्या आया? What was the first thing you? आपके मन में सबसे पहला सवाल, सबसे पहला ख्याल क्या आया? What the first
thought came in your mind? Can you write down in chat box? First thing came in your mind, or someone want to share? I can unmute that. Just raise. It will never reach us. It will never reach us. कि हमारे पास नहीं, हमें कुछ नहीं होगा. वाह. किसी और को कुछ और ख्याल आया था? Anyone else? जिसके दिमाग में कुछ और रहा हो? अच्छा, उसके बाद में जब हमारे इंडिया में अनाउंस हुआ, तब क्या ख्याल आया? पहले तो हमें लगा हमारे पास आ ही नहीं सकता, हमको कुछ नहीं हो सकता, हम लोग एकदम सेफ है. फिर जब इंडिया में आया, स्टार्ट हुआ हमारे अपने शहर में, देन सबसे पहले क्या लगा? कैसा फील हुआ और क्या ख्याल आया मन में? इफ यू वांट टू राइट डाउन ऑन चैट बॉक्स, यू कैन राइट डाउन. अगर बोलना चाह रहे हैं तो बोल भी सकते हैं. आई विल अनम्यूट यू, और आप खुद अनम्यूट करके बोल सकते हैं एक दिन. Don't breathe. How can we survive? Wow, very good. हम प्रॉपर केयर लेते हैं तो हमको कुछ नहीं होगा. हम प्रॉपर केयर लेते तो हमको कुछ नहीं होगा. और 3 दिन के बाद कैसा लगा? जब वो करते हुए हमें घर में रहते हुए 3 दिन हो गए, तो हाउ क्या चेंजेस आए हमारे अंदर, हमारे थॉट प्रोसेस में, हमारी सोच में? Oh God, it's only 3 days. हम कुछ नहीं करेंगे तो भी हमको हो सकता है. हम कुछ नहीं करेंगे तो भी हमको हो सकता है. It will happen to someone else, not to us. आपकी लाइफ को कैसे अफेक्ट किया इसने? आप जो घर, आपकी जो नॉर्मल लाइफ थी, उसको कैसे अफेक्ट किया? आप खुश थे इससे? नो. आपको लगा था सब कुछ नहीं, तो क्या हो गया था ऐसा? इसमें क्या बंद, लॉकडाउन में एक्चुअली एग्जैक्टली बंद हुआ क्या? क्या चीज लॉकडाउन हुई इसमें? इस लॉकडाउन पीरियड में डेली एक्टिविटीज लॉकडाउन हो गई थी. डेली एक्टिविटीज लॉकडाउन हो गई. कौन सी एक्टिविटी? डेली एक्टिविटीज लॉकडाउन हो गई. अल्टीमेटली बोर किया. The office, gym, then other things, going out, everything was locked down. The normal schedule was hampered. ऐसा क्या था जो लॉकडाउन नहीं हुआ? The learning attitude. Learning attitude, very good. What else? लोगों से बात करना. Family time. सूरज का उगना लॉकडाउन नहीं हुआ, सूरज का डूबना लॉकडाउन नहीं हुआ, हमारी आपकी बातों को करने में कोई लॉकडाउन नहीं हुआ, पुराने दोस्त से संपर्क हुआ, ये लॉकडाउन में नहीं आया. वेरी गुड. सबने बहुत सही कहा है. आई लाइक टू म्यूट कर रहे हैं हमें एक बार आप सबको. लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, हम बहुत पॉजिटिव थे कि हम कुछ नहीं होने वाला. हम इस चीज को लेकर पॉजिटिव थे कि हमको कुछ नहीं होगा, लेकिन अपनी लाइफ को लेकर नेगेटिव हो गए. बाद में हम थोड़े दिनों बाद में हम नेगेटिव हो गए कि क्या होगा, सब कुछ बंद हो गया है, लाइफ बंद हो गई है, ना काम बंद हो गया है. लेकिन जैसे जैसे धीरे ये पीरियड बढ़ता गया, हम अपने माइंडसेट को थोड़ा थोड़ा शिफ्ट करते गए. हमारा ध्यान हमारे काम से हटकर हमारे घर की तरफ आने लगा. हम अपनी फैमिली को फोकस करने लगे. हमारे कुछ बंधु है जो किचन में जाके कुकिंग करने लगे, रोज नई नई डिश बनाने लगे. कुछ एक लोगों ने ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट किया तो लोग ट्रेनिंग से जुड़ने लगे. कुछ लोगों ने अपने बिजनेस को सोचना शुरू किया कि यार ऐसे बैठे तो कितने दिन रहेंगे, लेट थिंक कैसे हम इसको ऑनलाइन ले जा सकते हैं. तो मेरे कुछ फ्रेंड हैं, आप सबके भी होंगे, जो ऑनलाइन अपना बिजनेस अब रन कर रहे हैं. सो वी स्टार्टेड शिफ्टिंग आवर माइंड से फ्रॉम केयरलेस कि हमको कुछ नहीं होगा, फ्रॉम देयर टू स्कैर्ड वन, फ्रॉम देयर टू पॉजिटिव वन. सम लेट डू सम प्रोडक्टिव कंस्ट्रक्टिव स्टेप्स. सो व्हेनेवर वी शिफ्ट आवर mindset to productive and constructive way, we generate positivity and that makes us happy. So this is the base of the happiness. To feel happy, to experience happiness, we have to keep our focus, we have to keep our perspective in the positive, productive and constructive way for each and every moment and each and every situation. Then we will be able to feel happiness each and every moment. We don't need to go and search for the moment, for the happiness moment. यार किसी बोर हो गया, किसी चलो फोन बात करते, थोड़ा बहुत होता रहेगा लाइफ में,
but it will not prolong for the long period. We can come back again to the happy situation in that aura of the happiness. Any questions? You can write in a chat box. अगर किसी को कोई question अभी तक पूछना है तो chat box में लिख सकते हैं. Anyone like to write down? Because हम इसके बाद again screen share करेंगे इसलिए. So I'm asking any questions? Okay. There is no questions? No. Fine. Screen share हो गई है? Yeah. Yes. Yeah, I can see now that it's. I want to show you one video. So lockdown is an opportunity. अगर अभी भी still someone is not able to find out what to do in lockdown, this video can give him the different kind of ideas. बहुत कुछ वो बता रहा है वीडियो कि आप जो कर सकते हैं. We need to first accept this situation. हमें उसको accept करना होगा. We need to accept it. When you think कोई possibility है, don't agree to that. There is always possibility. Just shift your mindset a bit, little bit from 1 degree to 1 degree, from 1 degree, you will be able to find out. हमें अपना solution मिलेगा, what we can do. Count your blessing. Still you are not able to start count your blessing. कि आज हमारे पास क्या क्या है. Being lockdown, instead of being in lockdown में होने के बावजूद भी हमारे पास आज क्या क्या है. What are the blessings we have? Organize yourself, your time, your day, your things. आप जब organize होते हैं, it save your time. You can utilize that time to do some constructive thing. If you organize everything is in place, you feel happy, and your work will be more efficient and more effective. Recharge yourself, regenerate yourself. अपने आप को रिचार्ज करिए, रीजनरेट करिए. लाइक बैटरी, मोबाइल की बैटरी हमें बार बार चार्ज करनी पड़ती है. सिमिलरली वी नीड टू रिचार्ज आवरसेल्फ. नाउ आई लाइक टू नो, कैन समवन शेयर, एनीवन लाइक टू से इस लॉकडाउन में हाउ यू रिचार्जिंग योरसेल्फ? इस लॉकडाउन में आप अपने आप को कैसे रिचार्ज कर रहे हो? By reading good books. By reading positive books. By reading positive books, and by reading, by talking to people, by watching good, by watching the other people. Other people, right? Very good. By आज के तो बहुत लोग work from home कर रहे हैं. By working on your passion and your second business. Yeah, great. Wow. All these things we can do. So a lot of things we can do in this lockdown also. पता नहीं था कि घर पे भी रहकर कितना कुछ किया जा सकता है.
हमेशा लगता था घर पे नहीं है तो कैसे होंगे। आई यूज टू गो डेली, घर से बाहर हम जाते हैं तो मेरी बहनें, मेरे रिश्तेदार मेरे को पूछते तुम्हारा तो मन नहीं लग रहा होगा, यू आर लॉकडाउन, यू आर ब्लॉक। नो टुडे बट आई कैन मेक आउट दैट मेरे पास टाइम ही नहीं है। आई एम मोर बिजियर देन अर्लियर डेज, क्योंकि पहले से ज्यादा हम लोग आज बिजी है, हमारे पास टाइम नहीं है। So that's the way, if you shift your mindset, you can find out opportunity and utilize that. I'm sharing the screen again. Health. Health is the wealth. Is the first wealth we all need. Health. So this is the time you can utilize to build your health. आप healthy exercise कर सकते हो. At least 15 minutes we all need to do the exercise. The health, our body, the physical body is the hardware. Which only we can experience happiness or unhappiness. उसी के through हम experience कर सकते हैं. अगर वो नहीं है तो हमारे पास कुछ भी नहीं है. तो each one of us need to focus and invest minimum 15 minutes to build your health, physical health. That will help. If you are healthy physically, it will help to maintain your mental health also. So physical health is the first priority you should have. Second thing, the person who are most important to you, जिनको आप चाहते हैं कि वो मेरे साथ हमेशा रहे, take care of that. हाँ, उनसे बातें कर रहे हैं हम, उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, उनके साथ हम खेल रहे हैं. So those are the things we need to do, not in lockdown period only, afterwards also. कि तो हमें हर वक्त रहना है, हर समय रहना है. So we have to take care of all these people always. And we need to spread the smile. हमें अपनी स्माइल चारों तरफ बिखरानी होगी. We need to cultivate the smile. एक किसान था, वो वाटरमेलन बनाता था, मतलब उगाता था. So उसको हर साल प्राइज मिलता था क्योंकि उसके वाटरमेलन सबसे मीठे होते थे, तो काफी बड़ी साइज के होते थे. जब उसके वाटरमेलन सबसे बड़ी साइज के होते थे, मिलने के बाद सारे अपने वाटरमेलन वो लोगों में बांट देता था. वो सबको बांट देता था अपने वाटरमेलन. तो किसी ने पूछा, आप अपने वाटरमेलन, जो बढ़िया वाटरमेलन, उनको नहीं बेचकर अपने आसपास किसानों को क्यों बांट देते हैं? तो उसने कहा कि आज जब वो किसान जब खेती करेंगे, उन्हीं बीजों को उगाएंगे, तो उनके बीज अच्छे रहेंगे, तो वहां से जो बीज मेरे पास आएंगे वो भी अच्छे बीज आएंगे. अगर मेरे बीज हमने अगर उनको घटिया बीज दिए तो मेरे पास भी घटिया बीज आएंगे और मेरी खेती भी अफेक्ट होगी, मेरा प्रोडक्शन भी अफेक्ट होगा. तो मेरे साथ वाले लोग खुश रहेंगे तो मैं खुश रहूंगा. जस्ट आई वांट टू आस्क, अगर आपको दो आदमी के साथ टाइम बिताने का ऑप्शन मिलता है जिसमें एक इंसान हमेशा खुश रहता है और एक इंसान हमेशा दुखी रहता है, आप किसके साथ टाइम बिताना चाहेंगे? विथ whom you like to spend the time, the happy person or unhappy person? Just write in chat box, please. Just write in chat box. Yeah, obviously we will all like to spend time with the happy person. So these are the things, are the component of the happiness. Through these components, we can experience happiness every moment, moment by moment, and throughout our life. Accept situation and yourself, stay with yourself, be honest, be 100%, be involved 100%, whatever you are doing at that moment of time. Do something meaningful goal, have meaningful goal and pursue that, do meaningful work. Make any sort of progress, very small, रोज थोड़ा ही progress करो, but you should do the progress. तो आपको satisfaction मिलेगा, you are moving towards your goal. Use your talent, keep a passion project, build strong relationship, being loved and give the love, help others and be grateful. We need to be grateful always. We need to be serve the society always. Then only we can able to. देने से ही हमें मिलेगा, बिना दिए हम चाहे नहीं दे और हमें मिले तो वो नहीं हो सकता है. These are the different aspects of our life, or you can say these are the things that affect our happiness.
ये सारी चीजें हमारे हैप्पीनेस को अफेक्ट करती है। फिजिकल, सोशल, ऑक्यूपेशनल, इंटेलेक्चुअल, एनवायरनमेंट, स्पिरिचुअल, इमोशनल। लेकिन किसी की लाइफ को कोई एक एस्पेक्ट ज्यादा अफेक्ट कर रहा होगा। For someone is the physical is more priority, for someone is intellectual is more priority, so for someone is spiritual is major priority, for someone occupational is a major priority. So we need to know कि हमारी priority क्या है. We need to decide what is major for me. Just like, for example, like to say, for me, intellectual is the most priority. Second priority is for me the physical. For my husband, also intellectual is a priority, but with that, occupational is a second priority. So day before, like when the lockdown started, I was doing one online course. Few days was left. So suddenly lockdown होने से कोई helping staff नहीं रहा और मेरे पास घर का workload आ गया और it was an online course for really 6 to 7 hours daily. So I don't know how to complete that. Then I said my husband कि वो हमको course करना है, क्या करे? He thought, okay, don't worry. You do your work, you do your course, you complete your study, and I will look after the house. So by 31st, I completed that. And by that day, all this Zoom training programs started. Programs होने शुरू हो गए. What I could do, so I started spending my time on that after completing my online course. So then my husband said, "अरे हम घर का काम कर रहे हैं, तुम्हें training वगैरह देख रही हो, तुम्हें session देख now." So now you look after the home. अब तुम्हारी पढ़ाई हो गई, study with that course completed, you will start looking after the home. So I got a bit annoyed कि मेरे को लग रहा था मेरी learning छूट रही है, जो इन sessions, इतने session, training session हो रही है, उनसे हम सीखना जो I'm not able to, हम उनको सीख नहीं पाए, तो हम थोड़े disturb हो गए. Then I cooled down, I spoke to one of my friends, she suggested me that for you, family and learning, both are important. You can't think of yourself without your family. So we have to sync all the things, both the things, and accordingly we have to organize our life. So similarly, from that day, I have planned my time. Certain time I given to my learning, these sessions, and certain time I allotted to my family. So that way I made peace and happiness for me. Similarly, we all need to identify first, out of these 7 aspects, which is the major or main priority for me. First priority, second priority, third priority. It's not your priority. With that, you have to think of the priority of the people who you are interacted with you at home, family, relative, friends, office में employee, senior boss. So you have to sync your plan accordingly. Then only उसके बाद ही you will be able to get happiness. क्योंकि वो भी हमारी responsibility है. Family is also responsibility. अगर हम उसको पूरी नहीं करते हैं, तो वो हमें हर वक्त unhappiness देता रहेगा, चाहे हम अपनी कितनी भी learning कर लो. So that synchronization, that alignment is required. Anyone can say how? क्या कोई बता सकता है जिसे they know what is their priorities? जिसने इस चीज को identify किया हो, chat box में लिख सकते हैं. You can write down in chat box. What's your priority out of these 7 aspects of life? इन सातों जो spheres है उसमें से हमारी priority क्या है? अगर आपने identify की है, आपको पता है आपकी क्या है, तो you can write down on the chat, in the chat box. Are you there? आप लोग सुन रहे हैं मुझे? Be family emotional. Yes. Okay. Yeah, emotional. Okay. More, I want need more. If anything more, environmental, emotional, family. लेकिन फैमिली हम लोग कह रहे हैं, लेकिन जब हम काम कर रहे होते हैं, जब लॉकडाउन नहीं रहता है, तो क्या हम फैमिली को उतना फोकस देते हैं? All of them, no doubt about it. उसमें भी लेकिन हमें अपनी प्रायोरिटी डिसाइड करनी होगी कि वो क्या है, कि कौन सी मेरे लिए मेजर प्रायोरिटी है इनमें से. We need to do identify. Wow, spiritual, physical and social. तो can you क्या आप बता सकते हैं? Whatever work you are doing throughout the day is aligned with your priorities, aligned with the aspect of life which is more important to you. क्या आप बता सकते हैं आप सारे दिन जो भी काम कर रहे हैं, it is in align with that? Yes or no? या कभी आपने ये जानने की ये assess करने की कोशिश? Wow, very good. Sir, it's perfectly. I can expect. आपसे हम ये expect कर सकते हैं, sir. Not all.
कभी आपने ये असेस भी करने की कोशिश की मेरी प्रायोरिटी क्या है, अलाइन है या नहीं हो? यस, वाओ रमेश जी, वेरी गुड, बहुत अच्छी चीज, आपसे मिलना होगा। वाओ, बहुतों ने कर रखा है, ये सब बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिन्होंने नहीं किया है, जिनको नहीं पता है ये चीज, या जिन्होंने मेडिटेशन ट्वाइस इज अलाइन, वाओ मेडिटेशन ट्वाइस, बट व्हाट आर द अदर थिंग? हमारी लाइफ में बहुत सारी चीजें, 7 एस्पेक्ट्स है, तो उसमें हम कैसे कर सकते हैं? देयर इज अ वन टूल, इट्स अ वेरी इजी टूल, यू कैन यूज दैट टू डू दिस। यू कैन मेंटेन, हम अपना हिसाब किताब रखते हैं, एवरीवन, हम लोग अपने रुपये पैसे का एक हिसाब किताब रखते हैं, किसको क्या लेना है देना, किसने क्या कहा, बट वी स्टार्ट, वी नेवर मेंटेन आवर हैप्पीनेस डायरी. If you start maintaining this happiness diary, so very simple diary, you just have to write down incidents happen with you. It may be incidents, it may be some person से आपने मिलना होगा, किसी से आप मिले हो, या कोई इंसिडेंट हो, कोई घटना हो, कुछ भी हो सकता है, कोई सामान भी हो सकता है, कोई इंसान भी हो सकता है, कोई छोटी सी बात भी हो सकती है. You have to write down the incidents. उसका वो इस 7 एस्पेक्ट्स में से किस एस्पेक्ट से रिलेटेड है? वो फिजिकल है, सोशल है, इन्वायरमेंटल है, स्पिरिचुअल है, any one of this हो सकती है. out of this 7 you have to write down this is related to which aspects, and उसका रीजन क्या है, उस घटना में ऐसे क्या था जो आपको खुशी दी, जिसने आपको हैप्पीनेस दी, या कुछ ऐसी घटना जिससे आप बहुत दुखी हुए, अनहैप्पीनेस भी है, तो दैट आल्सो यू राइट डाउन हियर. अगर आप यू स्टार्ट राइटिंग दिस डायरी फॉर फ्यू डेज, you will be able to make out कि हमारे लिए what are the major aspect is important, हमारी प्रायोरिटी क्या है. You will able to make out, and then you can analyze. So दिन में हम जो हर रोज जो काम कर रहे day to day, is it that in align with that my aspects or not, जो मेरे लिए जरूरी values है, उनसे वो align है या नहीं, that can able to give you the idea, and you can then revise your schedule. You can be more consciously identify the reasons which can make you the happiness. कहाँ आपको अपना फोकस शिफ्ट करना है, आपको, यू कैन मेक आउट दैट एंड यू कैन वर्क ऑन दैट, एंड यू कैन बी मोर हैप्पी डे बाय डे, एवरी मोमेंट एंड थ्रू आउट योर लाइफ. आई लाइक टू, दिस इज वन Japanese by is regarding the life, the way the Japanese people lifestyle of the Japanese people, they say it's ikigai. It's taken from a book written by Hector Garcia and Francis Mireles. So they say that we need to know, हमें ये जानना होता है कि what you love, हमारा पैशन एंड मिशन उसी से निकल के बनना चाहिए. What the world need, हमारा मिशन ऐसा होना चाहिए जो दुनिया को कुछ दे सके, और हमारा ऐसा कुछ होना चाहिए जो हम क्या कर सकते हैं. तो दिस 4 पैरामीटर्स वी नीड टू फाइंड आउट कि चारों क्या है, हमें ये चारों पता करना चाहिए. आप वो डायरी मेंटेन करोगे तो यू कैन एबल टू फाइंड आउट द आंसर ऑफ दिस 4 क्वेश्चंस आल्सो. दिस विल गिव यू योर पैशन, मिशन, प्रोफेशन और वोकेशन, एंड यू कैन प्लान योर लाइफ हैप्पी ऑन द बेस ऑफ दिस. और आपको पता सकता है कि व्हाट शुड बी माय गोल ऑफ द लाइफ, हम कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हो, हमें कहाँ जाना चाहिए, जहाँ जाने से हमें खुशी मिलेगी. सो दैट व्हाट वी नीड टू आइडेंटिफाई. दिस इज अ बुक. Ma'am, I've got a question. Hello. You can read this book. Hello. For this, आप ये ले सकते हैं, बुक खरीद सकते हैं इसके लिए. You can read this book to know more about this topic, and it can help you to be stable, peace and happiness in your life. Thank you. I'm open for question answer. अगर किसी को कुछ पूछना है तो I'm doing unmute now. Hello, Ma'am, Ruchi here. Can you hear me? Hello. Yeah, I can hear you, Ruchi. Tell me. I can't Hi. see you. Can you on your? No, because of the bandwidth reasons, I have switched off the video. So. Okay. All right. Okay. When you were talking about the happiness diary, were you hinting? Yeah. Oh, I think. Why don't you write down in the chat? I think it's happiness diary regarding happiness. Gratitude. Yeah.
Sorry, I can't hear you. Ruchi, we are losing your voice, so you'll have to. It's better if you could type it in the chat box. I'll do. You type. Yeah. If you type in chat box, Ruchi, can you type in chat box? Can you please write in chat box, or somebody else can? If any other questions? Ma'am, I believe what she was asking was, Yeah. is a happiness journal the same as a gratitude journal? No, it's a different, ma'am. And how much from the gratitude? How much of the attitude of gratitude is, contributes to us feeling happy? How much it is, ma'am? It depends. The happiness is personal. It's a personal thing. So if it's in your personality, how much is the gratitude matters to you? कि आप लोगों को आभार जताना, it depends upon that only. But at least 10% minimum it's a part of the happiness. Minimum 10%. What I feel in my view, in my life, happiness, gratitude matters 10% minimum. But it's for you, it could be different. You have to value yourself. You have to find out. For some person, it could be 100% also. So for some person, it could be 90% also. It's vary from person to person. Is it fine, ma'am? Are you Right. Thank you. able to hear me? Yes, I Yeah, could hear you. That was actually Ruchi's question, which I just spoke out to you because we could not hear Okay. Ruchi. Right. Okay. Thank you. Yeah. Thank you. Any other question? मेरा एक क्वेश्चन है. हेलो, कैन यू हियर मी? या आई कैन हियर यू. हाँ, हम सुन सकते हैं, बोलिए. मैं बोलिए, आप बोलिए, हम सुन सकते हैं. मैं एक हाउस वाइफ हूँ. मैं घर के रूटीन वर्क में हैप्पी रहती हूँ, लेकिन वो भी मुझे सेटिस्फाइड नहीं करता है. अब सब बच्चे बड़े हो गए, सब बिजी हो गए. आई एम फीलिंग वेरी लॉनली. एंड व्हाट वी हैव टू डू? आप अपनी कोई हॉबी जो आप करना चाहते थे लाइफ में नहीं करने पाए, उस हॉबी को आप लाइक I can't identify this. I can't identify this. आप I have आइडेंटिफाई नहीं nothing. कर पाए. I hope I have not got talented. Start writing. आप अपनी डायरी लिखना शुरू करिए. आप ये डायरी जो हैप्पीनेस डायरी हमने कहा है, स्टार्ट राइटिंग द हैप्पीनेस डायरी फॉर 7, वो लिखना शुरू करिए हैप्पीनेस डायरी फॉर फ्यू डेज. यू विल बी एबल टू फाइंड आउट फ्रॉम दैट डायरी कि क्या कौन सा इंसिडेंस आपको सबसे ज्यादा खुशी दे रहा है. In that area, you can find out your hobby or your vocation, something like you can move in that area. That will make you give you the fulfillment. वो आपको एक satisfaction देगा. Okay. Ma'am, pertaining to Ma'am, the can I add something to that, which she please? has asked just now, she is a housewife and उनके साथ में इतना एक्सीडेंस अभी होना ही नहीं है. She is not having the exposure of having different activities. Then her diary, I don't think that will support to have a right judgment what she likes or what she doesn't like. Hi. Can I? आप जो बोल रहे हैं, I'm ready. Okay, please carry on. I will interrupt again afterwards. Yeah. What you want to say? बोलिए. Ma'am, am I audible? The question was regarding a housewife. That housewife is not able to understand that what makes her happy. And since she is a housewife and she is not having since she is not having a much exposure about the different activities, she want to get understanding that what makes her happy. Start writing that also. I just share you example of my mother. I think she is also here. Sorry, I can't hear you. Yeah, I am in the listening mode. Please. Yeah, you are listening. Okay. तो उसपे क्या होगा? Once you start writing, let's say in the whole day, उसने बहुत अच्छा खाना बनाया. She made a good food, and उनके घर वालों ने उसको praise किया. She felt happy. So this is a happiness moment. So what she needs recognition, isn't it?
for her they expect the recognition from family is happy. Like वही खाना उसने घर में और लोगों ने भी खाया. They also had that food. उन्होंने भी उनकी उसको मतलब बहुत तारीफ की, but उसको इतनी खुश नहीं हुई. I'm just giving a hypothetical case. So that's not the happy moment for her. But the family member ने उसके लिए की, so that's the happy moment. So she wants reward recognition from the family member. अगर से reverse, if situation is reverse, अगर बाहर वालों ने तारीफ की और वो ज्यादा खुश होती है, so that means she need reward recognition from the outside. Then she need to do some activity now to बाहर से recognition मिले. These are the small finer points you need to write down in the diary. कि what incidents happen, किस aspects से related out of this seven aspect of life, and why, what made her happy. Once you start writing, maybe one small moment, I'm sure she will be able to find out that. I think I'm able to satisfy your. Am I able to satisfy may I also add one thing, Sunita ji, with your permission? Yes, yeah. Sure, yeah, madam, about exposure when we are talking, then this is an age where even sitting in one desk in one corner of your house, you can be exposed to the entire world. So, gravitate towards things, explore things, and write in your happiness diary, as Sunita ji said, what pulled you, what you could stick around, which site you liked, which thing you liked. Every day explore yourself as if you're exploring yourself for the first time. I think it helped me a lot, and it helped us, all of us. Sunita ji being a chartered accountant is now a trainer. I think we all found our calling just with this happiness diary. So I think it's a wonderful idea. Try this. Ma'am, can I add something with your permission to this question? Yeah, sure, ma'am. It's a forum to share the experience. We are enriching each one. Yes, thanks. Yeah, so we just asked, and everything, the happiness diary is definitely one very important thing. But just to make a connect to what she's saying is, first, I believe happiness cannot be stationary. Something which gives me happiness at the age of 20 might not give me a happiness at the age of 50 or 40. It keeps changing. So something, if a common housewife is, if a housewife is doing something when she's a new bride, she comes, a simple activity of making food, people appreciating it will, take her to the 9th cloud. But that might not happen at the later stage also. So I believe a housewife has given a time to the family, but now once the kids are grown up, she needs to give the me time, which is missing. Till the time, as जैसे आपने शुरू किया था, तो आपने बोला था कि contentment, happiness is contentment. अभी ये happiness इन्होंने दिया. अपने लिए the me time she has not explored. That's what I find. So whatever gives her happiness, she needs to give the me time, explore herself, जो कि definitely diary से भी आएगा, and she needs to give the me time. I think that's important. You're absolutely right, ma'am. लेकिन वो भी me time कहाँ देना है, उसको वो जानना होगा. For that, diary is the only thing. Diary is the one time. It's every day, throughout the day. हमेशा लिखते रहना. So whenever you change, your focus is changing, your expert is changing, you can change your focus and all those things accordingly. Yes. So that's उससे उनको help मिलेगी अपने को explore करने में. पता चलेगा कि what actually will be the right thing for her. फिर उसमें वो आगे जा सकती है. Right thing for her. आगे जा सकती है. That's it. Thanks so much. मेरे को इसने बहुत help किया. Yeah, thanks really for sharing. Sunita, can I also add something? Sure, ma'am. Yeah, sure. In one of the training you took in Kolkata mention, you said one point. Before sleeping, just talk to yourself every day. Can you elaborate that point? It is it really helped me a lot to identify exactly what I really want in life. So why don't you share that? No, the way you express is really awesome. So I want you to continue. It's your point. The point you elaborated with delta, theta, gamma, I really admire. Yeah, this actually again a different topic. So if you want to, it requires a lot of time also to explain just on 2-3 lines, just elaborate. That can help the person who's asked this question.
Okay. Like we have a two different minds, subconscious mind and अपने दो दिमाग होते, दो हिस्से हैं दिमाग के, conscious mind and subconscious mind. Subconscious mind I can explain like maybe I'm sure that that lady may be hearing the first time, so as a layman language I'm explaining her कि जब हम सो जाते हैं तभी हमारा दिमाग काम करता है, तो वो जो दिमाग है वो सबकॉन्शियस माइंड आप कह सकते हो। और जब अभी हम बात कर रहे हो, आप हमको सुन रहे हो, वो कॉन्शियस माइंड है। हम अपने अटेंशन देके उस दिमाग से हम अपनी एक दूसरे की बातें सुन रहे हैं, उसको अप्लाई कर रहे हैं। तो सबकॉन्शियस माइंड जो हमारा होता है उसमें हमारी सारी मेमोरीज, सारे एक्सप्लेनेशन उसमें जाकर शेयर हो चुके हुए होते हैं। तो हमारे दिमाग की भी कई अल्फा बीटा गामा रेंज होती है, वेवलेंथ होती है, आई शुड से दैट वेवलेंथ। तो वो वेवलेंथ डिफरेंट वेवलेंथ में हमारा दिमाग डिफरेंट वे में काम करता है। तो आई एम नॉट गोइंग इनटू टेक्निकल पार्ट ऑफ द वेवलेंथ नाउ, आई जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन। जब हम सोते हैं तो जब हम एक तुरंत हमें नींद नहीं आती है, तो वो जो नींद नहीं आती उन्नीदी स्थिति जो बोलते हैं हम लोग, हाफ स्लीप रहते हैं जो हम लोग, फिर उसके हम गहरी नींद में सोते हैं। जो हाफ स्लीप वाली जो नींद रहती है उसमें हमारा सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड दोनों काम कर रहे होते हैं, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड उसमें बहुत ज्यादा इंट्यूटिव होता है। हमें जो इंफॉर्मेशन इंट्यूशन उसमें मिलते हैं, अगर हम शांत से बैठ कर सबकॉन्शियस माइंड में इंट्यूशन को अपने ध्यान दें, और अगर कुछ भी हमारे दिमाग में आए वो अगर हम उसी समय लिख ले, जैसे रात को हम सो रहे हैं, सोने के पहले हमारे दिमाग में जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम सोचते हुए जब सोते हैं तो हमारे दिमाग में कई सारे उसके आंसर मिल जाते हैं। वो हो सकता है पहले दिन नहीं मिले, दूसरे दिन नहीं मिले, तीसरे दिन नहीं मिले, चौथे दिन नहीं मिले, छठे दिन नहीं मिले, सातवें दिन मिल जाए, लेकिन वो मिलता जरूर है, आपको करना होता है। I find my unanswered questions answer like this only. When I give this training, a different kind of training also, I do this exercise. So I find the different ideas through उस पीरियड में, उस माइंड स्टेट में हमें वो आइडियाज आ जाती है ट्रेनिंग के लिए भी। कभी हम दिन में दोपहर में सोते हैं, तो दोपहर में सोने के समय भी अगर थोड़ी देर पहले हमारे अपने दिमाग में उन सवालों को लेते हुए अगर सोते हैं, तो हमें उस समय भी कई बार वो जवाब, की दोपहर की नींद बहुत गहरी नहीं होती, वो हाफ नींद होती है, तो हमें कई सारे जवाब मिल जाते हैं। तो उसी समय हमें उठ के वो जवाब लिख लेने चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए बाद में लिखेंगे, क्योंकि बाद में हम उनको भूल जाते हैं, वो हमें याद नहीं रहते। तो इफ we do like that, we can get answer to our questions also. I think I'm able to satisfy, I'm able to explain the thing. Yes, very much. Hello. Yes, very much. Thank you. Thank you. I'm asking the lady. Yeah. Ma'am, I'd like to add something, please. Else? Yeah. Ma'am, I'd like to Sure, add something, ma'am. please. Yeah. Yeah, sure. I know a lot of people have given answers to this particular thing, but I'd also like to add my 2 bits, both from experience as well as counseling other people. And this being that with the case of most housewives, what happens is that they experience an empty nest syndrome after the kids have grown up and everything. So because of this emptiness, this lack of purpose which is now there, can create a lot of problems, including depression also. So here, I think your idea of maintaining a happiness journal is fantastic. I think that could really help. Along with that, if any kind of hobby, taking up a hobby will also help. Now, I understand that maybe at this point of time, and this is not just for the lady who asked the question, but also for anybody who feels that, what am I doing about some me time? I'm always living life for others. What am I doing for myself? And many people said कि हमारे पास कभी कोई hobby थी नहीं, हमने बचपन में भी नहीं किया, पढ़ाई में time निकल गया. So I feel that exploring different things, like maybe taking up gardening, cooking, any activity, just for even a month each. And if you like it, great, continue. If you don't like it, leave it. But at least it gives us the opportunity that, yes, I have tried it out and it has really helped. Yeah. Very well said, ma'am. What you said is very well, but one more thing like to add, जो हमने पहले add नहीं किया था, that's something the housewife जो life होती है, वो अपनी life में बहुत comfort zone में आ चुकी होती है. I think to be life, meaningful life, first thing they have to come out of the comfort zone, जिसके लिए वो बहुत जल्दी से तैयार नहीं होती है, उसके लिए बहुत जल्दी से वो courage नहीं ला पाती है. So they have to come out of the comfort zone, and आपने जो कहा, they have to take action on that. Then only they will
make their life meaningful. कि अपने हाथ में है. We have to do, we have to act honestly with 100% focus. Then only you can able to get the happiness. अगर उसके बिना happiness नहीं है. भूख लगती तो हमें को खाना पड़ता है ना, बिना खाए थोड़ी ना पेट भर जाता है खाना सामने है. तो आपको हैप्पी रहना है तो you have to do the act जो आपको खुश रख सके, वो आपको करना होगा. That is also required. Sunita, yes. I'd like to add one more point. Yeah. Okay, Nosheen, you continue. Thank you. Ma'am, I also had another question. Yeah. And that is, what if, when we talk about identifying happiness, what makes you happy and everything, I believe a lot of people, including myself, say that if my XYZ is happy, then I'm happy. Or, मेरे बच्चे खुश है तो मैं खुश हूँ, मेरा शौहर खुश है तो मैं खुश हूँ. So basically saying that our happiness lies in the happiness of others. Although now I don't mean to be selfish when I say this, but I also feel that a lot of times we can't really expect other people to make us happy, one. And secondly, if we are going to constantly be happy only if others are happy, I think we are living a life for others and not for ourselves. So how do we get out of this trap where we are constantly spending a lot of time, energy, efforts into making other people happy, and at the end of it, if they don't get happy, what we realize is that it's just creating disappointment for us. So how should we get out of this? No, yeah, sure, ma'am. I just like to share one example of my personal example. Then it will be. Earlier, I used to stay in a joint family. So I'm a chartered accountant. I used to work full day, say 15 hours in a day. So I was not looking after the household work. My mother-in-law is 80 years old, so I was not looking after her also. So I was not bothered about that. Though she is my responsibility, I will be happy if she is happy. I can't be happy if she is unhappy. I should say that. I can't be happy if she is unhappy. So that's the thing. So in this scenario also, for your scenario also, you should not link your happiness with their happiness. You should change that they are not unhappy. You should ensure that much only. वो दुखी नहीं हो. You have done your role 100% what you can do. अगर आप इतना सोच ले, I think then you can be able to, let me clarify again, I'm not able to make the situation clearly to you. Now I'm staying in a unit family. My mother-in-law is with me. So आज मेरी I have the full responsibility of her. तो जब उनके साथ आज कोई भी problem होती है, तो I get affected. The what you are saying, अगर वो खुश नहीं है, तो आप भी खुश नहीं है. Because that is my responsibility. So we have to plan our day accordingly कि we do as much as we can do for them. अगर उसके बाद भी वो खुश नहीं है, then you have to get them away from your happiness criteria. That's the only thing I can suggest. Otherwise, आप कभी खुश नहीं रह पाओगे. Can I add something, Sunita? Here. Hello. Sure. Sunita, initial part of our marriage, now we prioritize others over our happiness. And happiness doesn't lie in just making other people happy. You have to make yourself happy. You have to prioritize yourself. You have to make sure that you are cooking for yourself, whatever you like to eat. You have to not just think about others. Do whatever you like to do. So what happens is women especially just in making others happy, they forget living their own life. So this is the time that they have to start prioritizing themselves, looking after themselves. It's good to take care of others, but first you have to take care of yourself. If you will not be happy, you cannot make others happy at all. It is within you that you can make yourself happy. It doesn't lies in others. It doesn't lies in things. It's the bent of mind that will make that person happy. I like to share one of my more experience, ma'am. I don't know, for me, the value is learning. Learning is always excite me. Learning always give me the happiness. So learning is for me is I think is the key point. Is the बहुत ऊपर है उसका level मेरे लिए. People say I'm a learner son. So I don't like the cooking, but for family I need to cook. So what I started, I connected that value with the cooking.
कि I'm learning cooking. I started thinking that way कि what I am doing, I'm not doing for them. I'm not doing cooking. I'm learning. Through cooking also I'm learning. So that way I shifted my value from that cooking into the learning cooking. So my value of learning is now inbuilt in the cooking. So now the cooking is not annoyed me that much as used to annoy me. इतने परेशान होते थे हम cooking को लेके, उतना अब हम नहीं हो रहे हैं. Because I've added that, I try to do some new way of cooking always. So थोड़ा learning उसमें आ रहा है, तो अब वो मुझे उतना affect नहीं कर रहा. तो some way you can also adjust your happiness with their happiness. You have to align your happiness with their happiness. Then you will also feel the happy. I think this is the way we have to find out. We can't leave them also totally, but we have to look after our happiness also. We can't leave ourselves. कि हम खुद खुश रहेंगे तब दूसरों को खुश करने पाएंगे. Otherwise उनको भी खुश नहीं करने पाएंगे. So you have to align their happiness and with your happiness. Then only you can be able to feel happy and make them happy. That's what I feel. क्योंकि आज अगर घर वाले खुश नहीं है, वो दुखी है तो हम परेशान होंगे. वो खुश है या कि नहीं हमको उससे मतलब नहीं है. लेकिन वो दुखी है तो हम जरूर परेशान होंगे. So that you should ensure कि वो दुखी नहीं हो, खुश नहीं हो लेकिन दुखी नहीं हो हमारे कारण. I think I can reasonably able to explain the things. Yes, Hello. Yes, ma'am. Thank you. Hello. Hello. Can you hear me? Hello. Hello. Yeah. Hello. Yeah, I can hear you. I am a housewife. I am a housewife. I have 2 kids. Yeah. Yeah. I have 2 kids. One is son, one is daughter. They are okay. They are 21 years old and 23 years old. Okay. In morning, when we make the breakfast, they demanding the variety of the things. For me, this item. For me, for this item. Okay. I prepare lots of item in breakfast. How many person Okay. I have? I made all different type of items for per person. Okay. I effort give so much. When they are taste it, they told me no, it's not tasty, and get up from the dining table. Then what we have to do? You have to sit with them and explain them कि what they are doing, that is not right. They are hurting you. You have to sit with and tell them that. Kabhi, have you ever told them कि this behavior is hurting you? कभी इस बताया सिचुएशन में है? खुश कैसे रह सकती हूँ? अगर रेगुलर रूटीन हो आपने जाए कभी बताया क्या? नहीं तो चेंज करना होगा ना. You have to shift. You have to shift there ना. आपने उनको बैठ कर बताना होगा कि ये बिहेवियर उनका आपको हर्ट करता है कि this behavior is hurting you. Yeah. आपने कभी बोला है उनको बताया ये बात? Because they are teenagers, they can't understand me. आपने जवाब दे दिया मैम, आपने खुद ही ने जवाब दे दिया. वो टीनेजर्स हैं और but they are hurting you all day. ना होगा. Anytime, 24 hours. When they will not eating, then what can I will feeling happy? आपको उनसे डिटैच करना होगा. What's your role? आपका रोल क्या? हमको उनको खाना बना के देना. That you have given. You have fulfilled your role ना. You have done that. So why you are feeling unhappy now? It's their role. अभी उनका काम है वो खाए या नहीं खाए. जब बच्चे नहीं भूखे खाए रहते नहीं हैं तो खाए लेटने को अच्छा नहीं लगता ना. You can't have both things. You have to decide your expect ना. आपको क्या expect? अगर आपका expect है कि नहीं वो खुश रहे, हमको उनको खाना खिलाना ही है, then you should not be unhappy अगर वो आपको कुछ कह रहे हैं तो. You have to cook for them. That priorities you have to decide. Until unless you decide your priorities and उनको align करेंगे, आप खुश नहीं रह पाएंगे. You have to do that. आपको priorities decide करनी पड़ेगी सबसे पहले. Do you think ये चीज सबके साथ होती है, हमारे साथ भी होती है. But I decided my priorities, so I don't get affected by that. Anyone else? Yeah, with your permission, ma'am, I suppose that she should first sit with her children. उनके साथ में बैठ के एक बार पहले ये जानना चाहिए कि उनको कैसा टेस्ट पसंद है.
एंड आफ्टर दैट योर वन ऑफ द लर्निंग क्वेस्ट उसको अप्लाई करना चाहिए कि उनको जैसा अच्छा खाना पसंद है तो अच्छा खाना कैसे बन सकता है वो खुद को जानना चाहिए। वो जान के वो बच्चों को साथ में लेके चलो आज हम साथ में मिलके खाना बनाते हैं, यूट्यूब से वीडियो देख के एक बार साथ में मिलके बना के ट्राई करना चाहिए, फिर खाना चाहिए। फिर भी बच्चों को पसंद नहीं आता है तो बोलना चाहिए कि ये यूट्यूब और ये किचन, आप बेटा बनाओ आज मैं खाती हूँ। ऐसा 2-3 एक्सपेरिमेंट करने के बाद में शी वुड बी हैविंग नाइस ट्यूनिंग। Nice tuning with them. Yeah, absolutely right. This is also a way. I think this is the right way also. Yeah. और जब खुद खाना बनाना पड़ता है तो जो समझ में आ जाता है आटे भाव दाल का भाव, खुद सब कुछ अच्छा लगने लगता है। सही है, सही। Right. लेकिन दैट्स द क्वेश्चन वहीं पे आता ना, टीनेजर बच्चे जल्दी से सुनते नहीं है बात, तो क्वेश्चन प्रॉब्लम वहां पर है टीनेजर बच्चे का होना। खाना नहीं बना और भूख लगेगी तो सुनना चालू हो जाएगा। अपने आप भूख, हम लोग को क्या होता है इफेक्ट होने लगता है कि खाया नहीं, पूरा दिन हो गया, एक दिन नहीं खाएगी 2 दिन नहीं खाएगी, अपने आप ही आके बोलेगी बहुत तेज भूख लग रही है बस कुछ बना दो। हाँ तो मैं तो कुछ अच्छा बना ही नहीं पाती हूँ and I am not a good cook. So okay, you help me, then I will, might be possible I can make it better this time and jointly work. Whatever he suggested is so practical in life and everyone, all of us, our kids behave like this. जब बहुत छोटे थे बच्चे, they were on milk, तो मिल्क छुड़वाने के बाद में उनको जब अनाज पे चालू करना था तब भी थोड़ा स्टार्वेशन तो देना ही पड़ा था। द सेम वे जिम्मेदारी कुछ सिखाने के लिए कुछ दूरियां तो बनानी पड़ेगी। ट्रू थोड़ा सा वो भी होना पड़ेगा, फॉर्म you have to be strict. You can't just let them take you for granted. This is actually a very wonderful session, I can say. All are opening up so well. Beautiful. Hello. Thank you. Thanks a lot. Yeah. Hello. Yeah. Tell us. Sunita, I'm Tulsi here. I just want to add a few points. Am I audible? Yeah. Now you're audible. Yeah. Tell me. Okay. Yeah. बोलिए मैम। मैं क्या बोलना चाहती हूँ कि बच्चों को तो बहुत can't hear you. आवाज चली गई आपकी। You have to start giving responsibility to them even when they're. Yeah. We can't leave the responsibility. Okay, then I'll text there's a network issue here. Yeah. If you can write in a chat, I will read it out. Oh, of course. Yes. Thanks. Is any other question anyone has? Any feedback? So I guess Ma'am, thank you so much. I think the entire session was very good. People did open up, yes. And I think it was very practical to hear not just your tips, but all the others from their experience. And one thing I'm particularly grateful for is when you mentioned that rather than ensuring that you become the driver for somebody else's happiness, rather than that, just make sure that you don't give them any sadness. I think, I'm going to start practicing on that part at least. And let that be the start for my takeaway from this session. Thank you for giving my answer. Hello. Thank you for giving our question answer. Yeah. I will start to write down the diary. What will make me happy? Thank you. Please do that. If you want to contact me anytime, you can contact me. Thank you. Thank you. Hi, this is Rahul. Hi. The session was really wonderful. Learned a lot of new things from it and surely apply. Yeah, thanks. If you like to share one more thing, what's the
out of Yeah. those few things. Yeah, like if you cannot give happiness to other person, don't give pain to the other person. Yeah. That's one of the most important things. Thank you. Thank you. Hello, Sunita ji. Hello. हाँ जी. Thank you very हाँ, much. बोलिए It was a very nice session. Thank you very much for this. Thank you, And sir. we had been together in आपका NTTS. नाम अगर बताए तो. I am Dipesh Khandelwal. Oh, Dipesh. Oh, Yes, Dipesh. Yeah. we I were love together you. in NTTS, and I am very Yeah, very yeah, I happy. can. Yes. I am very happy to be a part of this session. It was very nice. Thank you very much. Thank you, because I am really grateful you've been here. Thank you. Okay, thank you. गीता मैम, हैट्स ऑफ, बहुत बढ़िया सेशन रहा. थैंक यू सो मच. Thank you, Rajiv ji. Thank you. Hello. Hello. Yes, please. Hi, Yes, Tulsi ma'am. here. Yeah. It was really wonderful and simple yet very powerful with a lot of live examples which we are going through day in, day out. And my one takeaway is the happiness diary. That looks very nice, and I started writing when people are talking. No, so I started writing like what happened from morning. So when I read back, it's oh my God, okay, I've reacted like this, I've done like this. Lot of self-learning. Thank you so much. If you keep on writing this, it will change your life totally. I will tell you. Yeah, it's yeah, in my sure. life. Sure. Thank you. Thanks a lot. Thank you so much. Would anyone else like to share anything, or No, I don't know. I think it's done. all right? Okay. All right. Thanks a lot, all of So, you. thank you very much once again, all of you, for attending this lovely session on the Learning Hour. And tomorrow's session would be at 7:30 p.m. and we would be learning about the concept of applied improv. So all those into training, those who are involved with transformational trainings, well, this is a very good tool that you should know. So be with us tomorrow at 7:30 p.m. We have retired Group Captain Nitin Belde, who is going to facilitate the session. Great. All right. So thank you very much. Yeah. Welcome. Thank you much, Sunita. Yeah, thank you. Thanks for opportunity. Yes. Thank you. Should we end the meeting? Yes. Yeah. It's a sound. Thank you. Good night. Good night.